बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम अपने गुज़श्ता लेक्चर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को शुरू कर चुके हैं जो रिसर्च फॉर डेवलपमेंट है, जिसका कम्युनिटी डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, सोशल प्लानिंग करने से पहले और कोई पॉलिसी बनाने से पहले रिसर्च का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि रिसर्च क्या है, सोशल रिसर्च क्या है, कौन लोग उसको कंडक्ट करते हैं। आज हम ये पढ़ेंगे कि सोशल रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। देयर आर 5 मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सोशल रिसर्च, जिसमें से पहला है मैनिपुलेशन ऑफ थिंग, कॉन्सेप्ट्स एंड सिंबल्स, कि हम कैसे उन सिंबल्स को, कॉन्सेप्ट्स को और जो चीज़ें हैं वहाँ पे रिसर्च में उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं और उनसे कैसे मतलब अखज़ करते हैं। नंबर 2, जनरलाइजेशन, कि जो हमने डाटा इकट्ठा किया है अगर वो एक स्मॉल मेजॉरिटी उसके ऊपर है, लोगों के ऊपर है, उनको हम कैसे जनरलाइज करेंगे बाकी लोगों के ऊपर। Verification of old facts, extension of knowledge, and knowledge may be used for the theory building and practical application. सबसे पहली चीज़ है manipulation of things, concepts and symbol. While dealing with the things, the scientist remain at the concrete level. He is able to purposefully handle things for experimentation. कि वो बहुत जो symbols हैं वहाँ पर मौजूद, या जो different चीज़ें हैं या concepts हैं, उनको बहुत एहतियात के साथ एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करता है और उसके से नताइज अखज़ करता है। बट एट दिस लेवल his results are at the best limited to particular things in a specific situation and none else. Therefore, the concept symbolizing the things and their properties are also dealt with so as to take much sense to the conduct controlled inquiry through abstract notions. Use of concept or symbol in the process of manipulation not only reduce the content and load of the things but also provide the scientist with a greater facility and effect. Generalization में क्या बात की जा रही है? The sole purpose with which manipulation of things, concept and symbol is undertaken is to arrive at statement of generalization, के इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम कैसे एक जनरलाइज स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। इट implies that the findings of controlled investigation should be a conclusion which will enable us to expect that under certain class of condition influencing a class of thing something will happen in generalized manner, कि एक ख़ास माहौल में एक ख़ास मैनर के अंदर अगर चीज़ों को अप्लाई किया जाए तो एक जनरल चीज़ जो है something happened in generalized manner, not only withstanding its degree. Verification of old fact, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में कि जो रिसर्च है, सोशल रिसर्च, वो पुराने फैक्ट्स को वेरीफाई करती है। ज़रूरी नहीं है कि वो नई चीज़ सामने लेके आए, बल्कि समटाइम्स हम अपने पुराने फैक्ट्स को वेरीफाई करने के लिए और उनमें नई डायमेंशंस तलाश करने के लिए भी रिसर्च करते हैं। A major purpose of social research is the verification of conclusions which have already been accepted as established facts. Sometimes ये होता है कि जो ऑलरेडी मौजूद हमारे पास फैक्ट्स हैं उनको हम वेरीफाई करने के लिए उनका के अंदर अगर सोशल, क्योंकि हमारा ताल्लुक सोशल वर्ल्ड से है, अगर हमारे बिहेवियर सोशल सोसाइटी में कोई चेंज आता है तो डेफिनेटली उस फिनोमेना के अंदर भी कोई चेंज आता है। तो हम उन ओल्ड फैक्ट्स को जो हमारे पास पहले से मौजूद हैं या उसको वैलिडेट करने के लिए हम दोबारा भी रिसर्च करते हैं। सिंस देयर इज़ नो प्लेस फॉर सेटिस्फैक्शन इन द एरिना ऑफ साइंस, क्योंकि साइंस में, रिसर्च में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर आपको सेटिस्फैक्शन हो, और स्पेशली इन सोशल साइंसेस के अंदर, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स के साथ, ह्यूमन बिहेवियर्स के साथ डील करते हैं, तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे वो रिसर्च रुक जाए। तो कुछ अरसे के बाद हमें उन्हीं चीज़ों को दोबारा जो है वो वेरीफाई करने के लिए रिसर्च करते रहते हैं। The established system of knowledge always warrant quantitative scrutiny so as to confirm whether or not the observation are in accordance with the prediction made on the basis of established corpus of the knowledge. In case it is confirmed, the empirical observation strengthen the established system of knowledge. Otherwise, in the light of research outcomes, the system of established corpus of knowledge calls for the revision or even rejection. तो समटाइम्स ये होता है जब सोशल फेनोमेना के अंदर चेंज आता है, फैक्टर्स चेंज होते हैं, माहौल में चेंज आता है, तो हो सकता है
के रिसर्च जो हमने रीसेंट रिसर्च की होती है वो हमें इस चीज़ का मशवरा देती है, या तो हम उन पॉलिसीज़, प्लानिंग और उन चीज़ों के अंदर चेंज लेके आएँ, और सम टाइम ऐसा भी होता है कि हम उनको टोटली रिजेक्ट भी कर देते हैं। आप अपने इर्द गिर्द देखें, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो पहले एक्सेप्टेबल हुआ करती थी और अब आप लेटेस्ट रिसर्च के साथ वो हम उनको डिनाई कर रहे हैं और बिल्कुल रिजेक्ट भी कर रहे हैं। नंबर 4, extension of knowledge. As a sequel of generalization, the seemingly inconsistencies in the existing corpus of knowledge are brought into light and attempts are made to reconcile those inconsistencies. The new general proposition established as an outcome of research also identify gaps in the established system of knowledge. जब हम previously मौजूद literature का, data का मुताला करते हैं और उसको analyze करते हैं, तो हमें उसमें गैप जब नज़र आता है तो नई रिसर्च कंडक्ट करते हैं ताकि उस फिनोमेना के अंदर, उस नॉलेज के अंदर हम एक्सटेंशन कर सकें। अ गैप इन द नॉलेज इम्प्लाइज inadequacy of the theory as well as failure of conceptual scheme to explain and account for certain aspect of social phenomena. So जो गैप हमें नज़र आता है उसके ऊपर हम दोबारा रिसर्च कंडक्ट करते हैं और ऑलरेडी मौजूद जो हमारे पास नॉलेज है, डेटा है, या कोई भी हमारे पास रिसर्च मौजूद है, उसमें हम एक्सटेंशन करते हैं, लिटरेचर में इजाफा करते हैं। नॉलेज में बी यूज फॉर थ्योरी बिल्डिंग और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बाय seeking to explain the unexplained social phenomena, clarifying the doubtful one, and correcting the misconceived facts relating to it. Social research provide the scope to use the fruits of research into two possible ways. Number ways जो हैं, जो अगर हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं उसको हम दो चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं. नंबर 1 इज़ थ्योरी बिल्डिंग एंड नंबर 2 इज़ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. In its basic or pure from social research gather knowledge for the sake of it, for building a theory in order to explain human behavior in its totality, only for the satisfaction of knowing. For construction of theoretic model, the researcher organized knowledge into proposition and then meaningfully articulated those propositions to constitute a more abstract conceptual system pertaining to a class of phenomena influenced by a certain class of condition. यानी जो हमने नॉलेज, जो डाटा इकट्ठा किया है, उसकी बेस के ऊपर हमारा जो रिसर्चर है वो नई ऑफ बॉडी नई जो थ्योरी है उसको भी डेवलप करता है, वो प्रपोजिशन इकट्ठे करता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट दोज प्रपोजिशंस वो एक नई थ्योरी डेवलप करता है. In its practical and applied form, social research gather information regarding the betterment of quality of life in social settings. The findings of social research are used as a means to an end, not constructed just as an end in itself. From the institutional point of view, the results of social research provide decision maker with proper guideline for policy making. सोशल वेलफेयर जो सोशल वेलफेयर के लोग हैं वो इसको यूज़ करते हैं वो फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, और जो भी रिसर्च आप यूज़ करते हैं कम्युनिटी के लोग जो हैं उसको प्रोजेक्ट राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं, और ताकि वो बाकी की बाहर की ऑर्गेनाइजेशन को या उस कम्युनिटी से बाहर जो ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट को, स्टेट को अट्रैक्ट करें ताकि वो उस एरिया की डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में हिस्सा ले. तो सोशल रिसर्च जो है वो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कम्युनिटी डेवलपमेंट के सब्जेक्ट के अंदर. अगले कुछ लेक्चर्स में हम रिसर्च को ही डिस्कस करते जाएंगे. हम टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सी रिसर्च कौन सी कम्युनिटी के अंदर बेहतर साबित हो सकती है. उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और आपको इसको सोशल प्लानिंग को और पॉलिसी मेकिंग को भी समझने में बहुत मदद मिलेगी. थैंक यू वेरी मच.